So good morning children, this is the last poem for class 10th, and that is what 7th poem for this session, and only 7 poem you have, and this is the last poem. So take the textbook during the analyze, and so animals poem, that is what 7th poem. So I write it here, animals poem. Animals poem by Walt Whitman. ये Walt Whitman, an American poet, modern poet. He started blank verse in American poem. Blank verse, that is what I told repeatedly. Modern poem, where no rhyme, no scheme, or nothing like that. It is what the sentence completed, they put the sentence and the poem ending. Generally, that is what the trend of modern poem. So Walt White is the modern American poet. He introduced the modern poem verse in America. And Animals poem is one of his famous poem, revolutionary kind of poem, free verse में लिखे हुए हैं. It is his works, song on myself, that is taken from song of myself. ये poem का what series से लिया गया है ये poem. Now हम लोग line wise explain करेंगे as usual with explanation. The theme of the poem and the title. Animals poem, here the poem is about animals and a contrast, a comparison between human and animal. They are more about happy, contented, and lead a satisfied life in comparison to human, and that's why the poet wish to live with animals. That's why poet wish, and this is a contrast between animal world and human world. ये दोनों वर्ल्ड का कॉन्ट्रास्ट है, एंड पोएट प्रीफर विश डिजायर टू लिव विथ एनिमल. So that is what the poem's main theme, an animal poems about the animals. Now line wise explanation, follow the lines. I think I could turn and live with animals. ये poets सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं animal में convert होके turn into animal and live with animal. They are so placid, peaceful, बहुत शांत, calm. So they are placid and self-contained, खुद को control में रखते हैं. This is human beings का jealous, mainly jealous and anger, hatred each other. ये feelings से वो लोग दूर रहते हैं. I stand and look at them long and long. Poet उनकी तरफ देखते रहे, intently observe किया. The qualities, the character of animals. They are placid, calm, peaceful, and they stay self-controlled in comparison to human beings. So this is the first part of the poem described about the positive quality of animal, which human beings is devoid of. And here the figure of speech used here, repetition, long word repeated here, that's why it is a repetition. Anaphora, I told it, consecutive lines में I word used to start two consecutive lines, and that's why it is anaphora. So ये two figure of speech used here in the first part. Second part, now start. They don't sweat. उन लोग को पसीना नहीं निकलता है. कैसे निकालेंगे? Rumors में whatever may be, they don't sweat and whine about their condition and cry. Whine means cry. So animal never cry about their condition कि मैं बहुत तकलीफ में है, गरीब हो गए. इस टाइप का feelings animal में आपको नहीं मिलेंगे. That is what the intention of the poem. They don't lie awake in the dark. वो लोग झूठ नहीं बोलता, अंधेरे में नहीं जाग कर रहते, जैसे इंसान का रात 12 बजे तक नींद नहीं आ रहा टेंशन में. इस टाइप का एनिमल में नहीं होता. एंड वीप फॉर देयर सिंस, जो पाप किए हैं उसको सोचते सोचते, जो रॉन्ग किए सोचते सोचते बहुत रात तक सो नहीं पाते इंसान. बट एनिमल्स में ऐसे कोई थिंग्स आपको नहीं मिलेंगे. एंड दैट्स व्हाई अगेन सेकेंड क्वालिटी ऑफ एनिमल्स दैट इज पॉजिटिव इन कंपेरिजन टू ह्यूमन. They don't make me sick discussing their duty to God. उन लोग का जो ड्यूटी है, इंसान एक दूसरे को ड्यूटी के बारे में डिस्कस करते, दिमाग खराब, कान पका देते हैं. एनिमल ऐसे नहीं करते. Not one is satisfied
not one is dissatisfied, sorry, not one is, एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं है, अपने लाइफ से सब सेटिस्फाइड है, खुश है. नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन डिस्टर्ब और मेड, कोई पागल और डिस्टर्ब नहीं है. विथ द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, कि मेरा ये है, इस चलते कोई पागल नहीं है एनिमल. भूख लगे अटैक किए, दैट इज व्हाट ए नेचुरल लाइफ दे लीड. स्वाइट हियर मीन्स कंप्लेंट है. सो डिमेंटेड, डिस्टर्ब, three word, two new words is here. When, cry, weeping, that is what, rote nahi. So that is what, this is a second part of the poem. And here the figure of speech used is metaphor used here. Metaphor को याद रखेंगे. ये sweat and wind refer to the cries and complaint of human beings. ये sweat and winds ये compare किया हो human being के साथ animal का, and that is what the metaphor used here. Comparison is the metaphor if the comparison is implied within the sentence. So this is a metaphor. Next, third part of the poem. Not one kneels kneels, that is what, घुटने में बैठ के, to another, एक दूसरे के पास छोटा नहीं होते. Not to his kind that lived thousands of years ago. अपना ही पूर्वज के पास कोई उन लोग घुटना नहीं टूटे, या फट ऐसे 1000 years पहले जो हुआ करते थे उन लोग के लिए खुद घुटना टेक के. That is what you cannot find in animal. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. एक एनिमल पूरा वर्ल्ड में रेस्पेक्टेड या अनहैप्पी नहीं है, जैसे एक ह्यूमन बींग्स पूरा वर्ल्ड में, दिस टाइप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी में होता है. एक पर्सन पूरा वर्ल्ड में रेस्पेक्टेड हो सकते हैं, बट इसी एनिमल वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे. सो दिस शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. और यही है उन लोग का रिलेशनशिप जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट देम. एनिमल वर्ल्ड का ये जो रूल्स है ये राइटर पोएट एक्सेप्ट किया. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, bowed down, tokens here, the qualities, also quality writers को दिया, and they evince means show, reveal, दिखाते हैं क्या, evince them plainly in their position. उन लोग का पोजिशन वो क्लियरली शो करते हैं कि what they are, not like a human beings who hide himself from the society, only the things they desire that they want to show in the society, but reality is something like that. तो ये जो एनिमल वर्ल्ड का एडवांटेज इज दैट इज सजेस्टेड हियर इज कंपेयर इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन वर्ल्ड, एंड द पोएट प्रीफर द एनिमल्स वर्ल्ड्स, दोज कैरेक्टर्स डिजर्व और शोन और गिवन बाय नेचर. I wonder, literary diverse here एक एग्जाम्पल है मेटाफोर का, दैट इज इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन्स आर रेफर टू एज टोकन्स. टोकन्स ह्यूमन क्वालिटी को, इनर क्वालिटी को टोकन्स हिसाब से दिखाया गया है, एंड दैट्स व्हाई ये टोकन वर्ड्स यहाँ पर मेटाफोर का एग्जाम्पल है. सो अनदर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर शो हुआ है. नेक्स्ट लास्ट पार्ट, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. ये सब क्वालिटीज उन लोग को कहाँ से मिला, राइटर सोचते रहे. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, कि उस स्टेज में क्रॉस करके आया और वो सब क्वालिटी में खो दिए हैं. दिस इज व्हाट द अनदर क्वेश्चन, कि पोएट कभी सोचते हैं कि ये सब क्वालिटी कभी मेरे अंदर हुआ करते थे. So in the throughout the poem you find the typical characteristic of animal world who lives by their own with full satisfaction without any jealousy for each other. They never showed any a single animal did not never got respect across the globe. That is what the point here suggested. And animal never but wins or cry about their sin. अपना खूब गलती की है उसके लिए नहीं रोते जैसे ह्यूमन बींग्स रोते हैं. Animal never but make one's bore about telling their what they have and they have not. ये सब बोल के एनिमल कभी एक दूसरे को परेशान नहीं करते जैसे ह्यूमन करते हैं. So these are the few qualities of animal world. Exactly, real intention of the poet is to give a criticism of human characters. Human things में जो सब wrong things है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया. इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स एनिमल से भी खराब है. रियल में इज दैट कि कुछ नेचुरल क्वालिटीज एनिमल्स में है जो रियली रेस्पेक्टेबल इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग्स. That is what the poet wanted to show. So the main theme of the poem is contrast between human and animal, and they are better in many points. That is what given in the poems. So thank you, and read the poems line wise. If you have any doubts, you can ask me personally as well.